All right. Good evening, Tanvi. Good evening, Aryan. Good evening, everyone. So we have with us Tanvi Dawrani, Aryan Gupta. Both of them, the superstars, have to be now in NLU Delhi, and now they'll be one of the mentors for you to talk about AILET, NLU Delhi. All right. Okay. So now, before starting, a warm welcome to both of you, Tanvi and Aryan. Good to see you both. बड़े बच्चे दिख रहे हो, Thank you so much, sir. right? It's a good transformation from school age to college age. I'm sure that you would be enjoying a lot in college. Okay, and thanks for giving us time at this juncture wherein we have 6 days left to AILET. Okay, I have got a couple of questions from students. Before we start on the discussion, I think I should put those questions in front of you so that we can lay the temperature of the discussion. Okay, and then we take this discussion to the meaningful forum. That's my entire thought process. Okay, so to start with, just a sec, please. Yeah. So to start with, one, we need to understand that how does AILET preparation, okay, differs from CLAT per se. That's the first thing which I think a lot of students have this question in mind, because I think तुम लोग के दिमाग में भी यही होगा यार जब तुम लोग prepare कर रहे होगे. So this thing I'm sure would be in your mind as well. कि क्या करें, okay. And second thing which I strongly feel is that the question which is there in the mind is कि preparation कैसे करें, right? How does this paper pattern talks about? How do we take it from this point of time? Because I think what I remember from your times, it is almost a similar time. CLAT से कुछ 1 or 2 weeks you have the AILET, right? So how does this struggle, the preparation of AILET takes place, and what are the nitty-gritties and everything? So that is what students have this in question in mind. So I'll leave the mic open for you, okay, and all to you. And students, you can quiz them. They're there in the chat box. You can always quiz them. We'll take the questions at the later stage, but first we want to understand that how the entire preparation takes it forward. All right. Thank you so much, Tanvi and Aryan. All to you guys, please. Tanvi, if you want to start. Okay, so first of all, hello everyone. First of all, I want you guys to believe before starting a preparation कि AILET निकलेगा. Stop neglecting AILET by saying कि नहीं होगा, seats बहुत कम है, हमारा CLAT बिगड़ गया, AILET कैसे होगा. Stop thinking all of that. You have next 5 days. भिड़ जाओ, जो होगा देखा जाएगा, बात खत्म. Apart from that, how CLAT is like CLAT and AILET में क्या difference है? CLAT is very much theoretical. You need to read a lot. AILET उतना theoretical नहीं है, which is a good thing, I believe. You have same like 90 minutes. You need to go through the 3 sections. काफी पढ़ चुके हो. Have faith in yourselves. Starting like taking it section wise, I believe English में CLAT only had RCs. AILET में मुश्किल से 1 max 2 RCs आने वाले हैं. There are gonna be a lot of other questions while solving. Like this is one thing that I used to do specifically AILET में. RC when you're solving English section last में करना, because reading whole page of RC is gonna fetch you 5 questions. वो भी सही हो या नहीं हो नहीं पता. Focus on other questions, other parts. जितने भी होते हैं synonym, antonyms, vocabulary, revise all of it very thoroughly. Go through them. जितने भी अलग questions होते हैं, then go on to RC. And GK में again, जितना I would say पढ़ा है, revise it. Do not study anything new. Do not jump onto new sources जो Telegram पे नए आ रहे होंगे. Revise this. जितना पढ़ा है, just go through your notes. Revise your material. And logic, which is like logic and legal now, revise all the concepts. Revise, like go through different types of questions. जितने भी होते हैं AR में, puzzles हो गए, आपका directions हो गया, blood relations हो गया, decoding, coding. Practice certain number of questions from all the types of questions. Go through all the concepts. Maths maybe, because I understand अब QT हट गया है, but then analytical reasoning में it might help. You never know वो कैसे twist करके questions देते थे. जो basic topics हैं, जैसे percentage हो गया, ये तो मतलब हर जगह लगना ही है ना, basic calculation तो आना ही चाहिए. Just revise. I do not think कि बहुत ज़्यादा time दो उन topics को, but go through basic formulas or the approach that you used to give उन questions के लिए. Apart from that, Aryan, if you want to add.
I guess you have summarized Vesto. But apart from that, I feel कि see the thing is that you need to understand कि CLAT is very subjective. ठीक है मतलब उसमें you don't know how the paper is gonna come. मतलब you cannot predict CLAT. वैसे you cannot predict AILET as well, but तब भी थोड़ी सी certainty you will find in AILET because the thing is कि like we always saw this thing in AILET कि the difficulty was constant except for the last year. मतलब Hamisha it was always difficult, but last year it was sort of easy. But the thing that you'll find is that the pattern of the paper was just the same. Okay, so it's like you know what kind of questions are gonna come in AILET, so that is why अभी भी like मतलब तुम लोगों ने जितने भी मॉक्स दिए AILET के just revise them, just try to understand कि these are the type of questions which are recurrently asked in AILET, and that is why you should pay extra focus upon that. And then you'll find कि in CLAT मतलब in AILETs you'll find different type of questions. Like for example in CLAT you will only see, as Tanvi said, like in English you will only see RCs, but in AILET you will see synonyms, you'll see grammar, you'll see figure of speech, you'll see punctuations, you'll see different sort of questions. So that is why if you are able to, like, the thing is that most of the people neglect this thing कि okay punctuation है ठीक है नहीं कर रहे या figure of speech है नहीं कर रहे, but if you just given an hour or half an hour to these sort of topics as well, then also you can score a lot. And एक mark का difference रहता है, to be honest, like because the thing is that there are only 60 seats, but that doesn't mean obviously like you have to trust yourself because you never know. Yeah. So see. अच्छा आर्यन एक बात बता, how does the time management differs in CLAT and AILET? Because CLAT का time management we take it differently, right? So are we saying that the time management is same or it's different? Because इधर तुम बोलते हो एक passage आता है, उधर we talk about multiple passages. Sir, to be honest, मतलब except for the last year, we have always seen कि है ना बच्चों को हमेशा कम ही टाइम पड़ा है, ठीक है. Like the thing is that in AILET, like I agree with the fact कि है ना CLAT में you have to read more and etc. But in AILET you'll find questions which will have a lot more difficulty, so that is why it takes more time. So it's not like कि तुम पे मतलब it's just because उसमें तुम्हें इतना read नहीं करना है तो you will have plenty of time. That's not the case. You will definitely find time crunch अगर पहले जैसा पेपर आता है, but अगर last year जैसा आता है then definitely you will have time. Like for example, like in my experience was that I finished my paper half an hour before the time only, and then I was like कि भाई what हाँ. So you need to understand कि ये नाम कैसे भी हो सकता है. If it's difficult, you will definitely have a time crunch. So how would you divide this time frame? Both of you, how did you divide it? For example, अभी तो quant आएगा नहीं इसमें. Now we are talking about 3 sections, right? It is 50, 30, 70 वाला area है. 70 में because legal is also kind of merged in logical reasoning only, right? So now how would you merge these sections and how would you divide the time? Because तुम्हारे और अभी में एक ही difference है. You were calculatively quantifiable in terms of 5 section. अभी वो 5 compress हो गए 3 हो गए, in which basically it was gone. So it's like 4 section compressed into 3. So how would you advise the time allocations to these sections? Sir, to be honest, like I'll not say कि say 15 minutes देना English को या 30 minutes देना किसी और subject को. I'll not say that because you never know the difficulty. So what I'll suggest is कि सारे like focus that जितने भी easy questions are you have to do it ASAP, and then जब difficult questions आते हैं then you have to adopt a different strategy which I'll tell later. But your main focus should be कि सारे easy questions you should be done away with as soon as possible, because you don't want yourself being like कि ये easy question था और ये मेरे से छूट गया या etc. I don't want this to happen to you, and so that is why what I'd suggest is कि see the paper and try to solve easiest questions better. Now you guys can take section by section. Actually, I'll mute myself so that these guys are well taking care of the section things. So taking section wise, first of all English. As I previously mentioned, CLAT we only had to go through passages and there was a lot of reading. It's a good thing कि AILET will get a variety of questions. जितने भी हैं, as I already mentioned, like this used to work for me that I used to solve RC end way
like I don't usually jumble a lot between sections, but while solving English section, I used to solve RC last because that used to consume most amount of time. उससे बेटर मैं synonym antonyms कर लूँ या foreign words जितने भी आते हैं, phrasal verbs, figures of speech, वो ज़्यादा quickly हो जाता था. Revise all of them. There are a lot of things. So CLAT में नहीं आता, but AILET में आता है. For example, go through idioms, go through phrasal verbs, go through figures of speech. Vocabulary CLAT में उतना नहीं आता था, AILET में आता है. So go through all the sheets that you have done, because this is what I did. AILET वाले दिन भी मैं सुबह vocabulary के I had my notes. मैं अपने रजिस्टर का पूरा रिविजन करके गई थी and trust me वही आया था. And that all was from word par CL के जो sheets होती थी वही सब था. So there's nothing new that's gonna come. You can also go if time है, the high frequency words का जो list होता है 300 words का अगर मिल जाए, अगर time है तो I wouldn't recommend studying anything new, but then AILET specifically lays a lot of emphasis on vocabulary. So vocabulary no. If I can add something, तो उसमें मतलब you may argue कि है ना इतने सारे vocab, मतलब इतने सारे words हैं, so how will you be able to cover मतलब इतने सारे words? But the thing is that if as Tanvi said कि high frequency word list, when you will find it on the internet, उसमें you will find जो words होते हैं वो past year papers में आए हैं. So that is why it's not like कि you have 10,000 words to revise or things like that. You can just focus upon those words as well. No, if you have time crunch, अभी तुमने जितने भी words कर लिए, revise them, and also if you can just give a brief view over that high frequency word list, then also तुम्हारा vocabulary वाला sort हो रहा है. And when revising vocabulary, I'd also say that pay extra attention to the spelling, because ये spelling वाले questions भी आते हैं. So when you are doing spelling वाले questions, सही बात है, very true. Yeah, so do those as well. Now, as I said, there are gonna be different kind of questions. So, like I've prepared, I and Tanvi, both of us has prepared this breakdown of 50 hours. We'll send it to you after the session. So, उसमें I've jotted down everything कि parajumbles you have to give in 1 hour, yeah, punctuation you have to do, a figure of speech you have to do. So I've thoroughly jotted down everything, and then you can refer to that list that I've prepared, or we have prepared for. Great, wonderful. Please start. So, with regard to GK, you need to understand that GK is the subject in which you can fetch the most number of marks in the least amount of time. So, what I'd suggest is कि मतलब revise GK thoroughly, ठीक है. It's not like कि don't get lazy कि ठीक है revision ही तो है and etc and then छोड़ देते हैं. But Aryan, इन लोगों का question GK का ये भी है यार कि अभी source कौन सा use करें. They're looking at, for example, apply मंथन होता है, Lucent है, couple of books are there. तो what would you guys suggest? अभी source use करें अगले 5 दिन के लिए, और GK का time allocation क्या है? ऐसा ना हो कि disproportionate अपन time कर दें. We end up spending 6-7 hours on GK. तो I think वो भी एक एक question होता है. Yeah, so see, starting GK with regard to, so there are 3 kind of GK. So first is static GK, second is current GK, and the third is current legal GK. So I won't suggest कि static GK ज़्यादा करना. I'll only say कि if you have done static GK, then just revise that and that would be enough. With regard to the current affairs, I'd say that start from October to June 10th, and you can just refer to month. I think it's not like just because I'm from CL, so that's why I'm saying ki Manthan kar lo, but Manthan covers most, all the news, to be honest. And if you just focus upon the major news, it's not like you have to remember every news, right? It's not like that. So just focus upon the news which are of the national importance, or something which can be asked in the paper. If you have referred to the past year papers, you will see ki kis tarah ke questions they ask. So if you will be strategic with how you want to study GK, then you can revise it in like 8 hours, like all the 8 months. So that would be more than enough. And then I'd strongly suggest that revise current legal GK, because current legal GK के आने के chances of the GK as well, like economics, history, and all sort of like national, international news, you will find that legal GK ka weightage would be the maximum. So that is why
refer to legal GK, revise. I guess CL ki there's one module as well about legal news and etc. हाँ एक है Just वो yeah, इनके एस्पिरेशन भी आ जाता है आजकल, so I'm sure yeah, they're yeah, yeah. getting the PDF. So just revise those, and I think you'll be done with. Tanvi, if you have anything to add. Also, someone just asked me कि static GK है AILET में या नहीं. Obviously है, but again, because I know a lot of students do not lay a lot of emphasis on static GK. Again, I would say 5 दिन है. अगर नहीं पढ़ा है, do not study it. अगर पढ़ा है, तो revise. Simple. Do not waste your time. Use your time very, very wisely. Obviously, emphasis will be on current, like general affairs and your current legal knowledge. Static GK पे इन तीनों में से सबसे कम emphasis देना. जो पढ़ा है बस वो revise करना. Simple. Also, someone just asked me where to practice one-liner GK questions from. Again, I would say जितना पढ़ा है उसको revise कर लो. If you are left with some time, then you could go for online जो MCQs मिल जाते हैं. There are many types है. GK Today हो गया, और भी कौन से आते थे? I guess Cloud Affairs वगैरह पे भी I guess हाँ GK Today के काफी आते थे. अगर टाइम बचे तो you can go and randomly solve them. वैसे इतना टाइम नहीं बचेगा, तो जितना GK है उसी को रिवाइज करो. ऑनलाइन उसके साथ ही प्रिपेयर हो जाएंगे. There is no specific way of preparing a one-liner separately. That is what I feel. Aryan, if there's anything else. No, yeah. Someone just asked me how to summarize syllabus like important ones in 5 days. For that, we have prepared a breakdown 50 days, like for 50 hours, like specifically what you need to do. So if it's possible, could you share the doc itself? Because काफी questions related are there. So you want me to share the document, or shall I give you the rights to share it? Let me share. Let me see if it's possible. You just WhatsApp me, and I'll share the document here itself. Sir, I've sent it to you. Just a second. You just keep conversing. I'll just put it in my share in the WhatsApp in the meantime. Please. Yeah. Also, so someone asked me. Yeah. Go ahead. Another question regarding vocab, जितनी है उतना enough होगा revise करना. I do not know आपके पास कितनी vocab है, but then जितना भी मैंने बोला majorly मैं फिर से बोलूंगी कुछ नया मत करो, because time waste मत करो. नया vocabulary याद नहीं होगा, but then जितना भी अभी तक पढ़ा है over past 1 year, 2 year, 3 years जितना भी है उसको revise करो, and revise it very very properly, because vocab ऐसी चीज है कि एक बार word पढ़ के won't really remember it. इसलिए revising is the exam में वो तभी बनेगा जब आपने उसको 2-3 बार पढ़ लिया है. So go through different vocabulary. Yeah, so someone asked me that mantras are very lengthy, and so how should we divide our time and all, and will it be enough? So definitely it will be enough. Okay, don't worry about that. And I understand that it is lengthy. So as I said that I'm not expecting you to learn or remember everything, right? What I want you to focus upon is that try to understand that some news are important, some news have more relevance in a real world. It's not like they're gonna ask you कि ICICI का कौन सा bot नया launch हुआ है. It's they don't expect us to remember these petty things, right? And when you'll see the mantras, you'll find... Aryan, I'm sorry interrupting you here. Is it the same document on the one I'm sharing right now? Yes, sir. I'll just a sec. Yeah, it's yeah. Oh, perfect. You please carry on. No issues. So what I was saying is that like I understand that it's lengthy, but what I want you to objectively focus upon some news and to deliberately leave others. And because I don't think so you have that amount of time that you can remember everything. Yeah. Yeah, addressing other questions. Someone asked approximately how many questions should we attempt. It could vary, like difficulty level per paper, but this is what I feel. 110, 115 is the minimum that you should do. There's no specific number. Again, I would say difficulty level will depend करता है, but this is what I used to do. इतना तो minimum होना चाहिए. Apart from that, there are a lot of questions regarding vocabulary कि कितना enough होगा या word par is enough. See,
I wouldn't say word power is enough. There's a lot of vocabulary जो आपने CL की sheets में बहुत ज़्यादा cover किया होगा. And past year papers में vocabulary आता है. And see, AILET is something जो pattern में बहुत variation नहीं करेगा. Difficulty level में कर सकता है. For example, 2015 से 20 papers were very difficult. But then 2021 में suddenly a difficulty level में drop था, but they didn't shift from their pattern. So yeah, you can go through their vocabulary of past year papers, repetitions हो सकते हैं, उसके आसपास भी हो सकता है. But there's nothing, मतलब मैंने पेपर नहीं बनाया, I cannot tell you if foreign words यहाँ से करना enough होगा, वहाँ से करना enough होगा. Revise करो, जितना पढ़ा है उतना revise करो, add कर सकते हो, time बचा है तो कर लो. But there is no specific जो मैं बता सकूँ कि इस बुक से पढ़ लो तो वो enough होगा. All right, one more question, Tanvi and Aryan, both of you. When we talk about vocab, because quite a quantifiable number of people are talking about vocabulary. Okay, what would you recommend? Learning the common air words, or are you looking at learning some difficult level of words? Because even when we say high frequency word, will these high frequency words suffice, or you are expecting these guys to learn something different in terms of vocabulary? बिकॉज अपने एक्सपीरियंस से बताओ कि तुमको किस तरह के वर्ड समझ में आए थे. एक होता है वर्ड पार मेड इजी, अपन सब चालू जाते हैं, राइट. Once we kind of go through this paraphernalia of elementary words, we have a next level of words to talk about it, right? So तुम किस तरह का vocabulary prescribe करते हो as of now? 5 दिन बचे इनके पास. So what I'd say is कि सबसे पहले मतलब it's not like कि मतलब word power made easy is मतलब the word list is very important जो word power made easy के end में दी है. So you should definitely revise that. You should like I guess word power made easy has around 1600 words, तो वो भी बहुत होता है. तो तुम पहले वो revise कर लो, फिर उसके बाद तुम high frequency word list कर लो. See, the thing is so that suffice तो nothing can suffice, right? So what we no can doubt about it. yeah. So अभी limited time में vocabulary का what we can do is कि word power revise कर लो, high frequency word list revise कर लो, फिर तुमने जो अपने words remember करें वो तुम revise कर लो, and फिर yeah spelling पे focus कर लेना, and yeah I guess that's it. Foreign words I could say, but फिर वही होता है कि वो फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, and I guess last कुछ year से वो आ नहीं रहा, so I don't think so that it's feasible कि अब तुम वो करना start कर दो. But one good thing you guys told is spelling पे ध्यान रखना, because spelling based questions can actually hit it, right? Yeah. Please continue. Sure. I mean foreign words I won't say कि बिल्कुल neglect करो. For example, foreign words हो गया, idioms हो गया, phrasal verbs हो गया. There's a lot of confusion. You do not have any. One second, there's a blackboard. हाँ, there's a lot of confusion and नहीं है आपके पास अपना material. So you could always like Google it, like Google important idioms list for CLAT or AILET या important foreign words जो AILET के लिए हो, बहुत सारा material मिल जाएगा. मतलब like 40 उसका list मैंने भी शायद end में यही किया था, मैंने idioms की list निकाली थी which had around 50-60 idioms and उसमें से काफी फंसे भी थे. मेरे ख्याल से टेलीग्राम भी इनका जो प्लेजरिज्म का अड्डा है वहाँ सब मिलेगा, if I'm not mistaken. हाँ भी important list मिल जाएंगी. All right. So I think now we should start for the plan for the next 5 days. I open the document in front of you. I'll squeeze it a bit so that एक बार में दिखना चालू हो जाएगा. थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, 100 पे कर रहा हूँ. I hope it is visible to you guys as well. Yes, sir. All right. So you want me to scroll it down, or you want me to stick it here first? You can just scroll it down. Okay. Right. And guys, please note it diligently out here. We'll also send you this document. Okay. Once we're done with the conversation. All right. I'm leaving on to you guys. So as we have written 2 hours to spelling, 2 to 3 hours on grammar, specifically upon the prepositions and articles, because उसके बहुत easy questions हैं and उसकी frequency बहुत है आने की. So that is why like it is a very like both these topics are very important. So just pay extra attention to them. Give 1 hour to figure out speech. Do around 20 to 30. I guess you'll find some list on internet. I'm pretty sure about that. So if you can just do that, that's well and good. ठीक है, फिर solve 3 RCs every day.
and those RC should have 10 questions each, and the difficulty should be above average, because in AILET we always see ki RC ki difficulty is nice only. So give an hour to that, solving an analysis every day. The thing is कि you'll the thing is कि तुम्हारी रीडिंग की प्रैक्टिस एंड सॉल्विंग की प्रैक्टिस जो भी तुमने करनी होगी, फॉर एग्जांपल इन रीजनिंग या लीगल रीजनिंग एंड व्हाटएवर दैट, मतलब तुम इवन इफ यू डोंट डू दैट, वो आरसी से कॉम्पनसेट हो जाएगी समहाउ, ठीक है. गिव 1 hour टू पैराजम्बल्स एंड लाइक आई नो कि 1 hour वुड बी लाइक कि 1 hour में क्या होगा, बट व्हाट आई वांट यू टू फोकस अपॉन इज द अप्रोच, ठीक है. कि ऐसा नहीं है कि बस कर दिया क्वेश्चंस, देख लिया क्या सही था क्या आंसर था. यू डोंट हैव टू डू दैट. What I want you to understand is that in the limited time we have to increase the efficiency, and that we can only do जब तुम हर क्वेश्चन की अप्रोच तुम देख लोगे कि ठीक है, व्हेन पैराजम्बल्स कम तो मेरे को ऐसे करना है क्वेश्चंस, या फिर फॉर एग्जांपल कि हाँ मतलब तुम्हें हर तरह के क्वेश्चंस की अप्रोच पता होना चाहिए. फॉर एग्जांपल इन असम्पशंस तुम्हें क्या कैसे देखना है, तुम्हें देखना है कि क्या चीज नहीं कह रहा है, तुम्हें क्वेश्चन पहले पढ़ना है, तुम्हें पहले पैसेज पढ़ना है, तुम्हें क्या करना है. सो एवरीथिंग शुड बी प्लान्ड. आई वांट यू टू फोकस ऑन द अप्रोच यहाँ पे, एंड गिव एन आवर टू पंक्चुएशन, बिकॉज वी हैव सीन पंक्चुएशन के थोड़े बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं. कोलन क्या होता है, सेमी कोलन क्या होता है, डबल अपॉस्ट्रोफी में क्या आता है. जस्ट रिवाइज दैट एंड यू विल बी I think this will suffice in the limited time we have. Tanvi, if you have anything to add. I think you have covered everything. उसके अलावा there were questions regarding grammar, like people are facing a lot of problem in English grammar. अगर कुछ specific topic से problem है, तो you could always refer to Wren and Martin, या फिर online search कर लो. Just Google whatever the problem you have है, sir से पूछ लो. अगर sir time नहीं पाए तो online search कर लो. There are a lot of like ample of resources. अगर किसी specific topic में problem है तो. Apart from that, yeah, I think you have sufficed everything. Okay, so GK, if you can tell. तब तक I'll answer the question कौन सा है. Tanvi, GK. GK के लिए as I already mentioned, static GK पे सबसे कम emphasis देना. Do not panic कि ओ मैंने static GK नहीं पढ़ा और मैं भूल गया हूँ, मैं भूल गई हूँ. जितना पढ़ा है उतना रिवाइज करो, और नहीं है तो फिर accept it and then focus more on current affairs and current legal GK. Do not waste time. Every hour is precious. 5 दिन ही है, तो पैनिक करने से अच्छा जितना पढ़ा है उसको और ढंग से रिवाइज कर लो. एंड जीके में ट्रस्ट मी, रिवीजन इज दी की. ऐसा बहुत बार मॉक में भी होता होगा दैट यू माइट फेस क्वेश्चन, यू विल फील कि ये तो मैंने पढ़ा है बट मेरे को आंसर क्यों नहीं आ रहा. उसका रीजन ये है कि आई हैवंट रिवाइज्ड इट मल्टीपल टाइम्स. अगर वही चीज 3, 4, 5 बार पढ़ा होगा तो मॉक में बनेगा एंड बहुत इजीली बनेगा. तो revise and revise and revise as much as you can, and do not opt for new resources, because I know ये last के time में Telegram पे इधर उधर बहुत resources आते हैं. Do not jump on them. जितना अभी तक resources के 2-3 refer करे हैं उसी पे stick करो, नए नए उसमें मत jump करो please. Aryan, is there anything else GK में? I don't think so. Tanvi and Aryan, there's a question which is passed on to me. Guys, try to passing on questions to Tanvi and Aryan only. I'll just pass on the question to you, that should we consider GMAT for RCs? That or 1000 RCs वाले होते हैं ना? ये लोग पूछ रहे हैं कि should we consider GMAT for RCs? मतलब if you are comfortable, I won't suggest कि है ना. What I'd suggest is कि अगर you have solved them पहले, या if it's somewhat manageable, then you can attempt it. But if it's completely out of the window, then it doesn't make much sense in solving them, because तुम solve करके तुम्हें वो skill तो आनी जाएगी. But what I want you to challenge is to challenge yourself. ठीक है, तुमने जितने भी लेवल का करा है, तुम एक लेवल ऊपर या 2 लेवल ऊपर करो. I won't suggest कि बिल्कुल ही तुम करना स्टार्ट कर दो. So yeah, if you are comfortable with solving those sort of questions, then definitely you can. But if you're not, then don't. And don't compare yourself to other people कि ठीक है वो कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ. It doesn't go that way. तुम अपना अभी तुम्हारी कैसी क्या प्रिपरेशन है, and
प्लान अकॉर्डिंगली, ठीक है। यू ओनली हैव 5 days टू गो, तो ईगो पे कोई बात नहीं लेनी है। जैसी जो प्रिपरेशन है उस हिसाब से प्रायोरिटी सेट करो कि ठीक है अभी ये करना है, ये करना है, ये करना है, एंड वो करो, रादर देन कंपेयरिंग योरसेल्फ कि ठीक है उसने ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, अब डिप्रेस होना है। यू डोंट हैव टू डू इट, इट डजंट गिव यू एनीथिंग, है ना। जस्ट सिर्फ रिवाइज करो एंड ट्रस्ट योरसेल्फ। लाइक आई एम टेलिंग यू, मतलब यू नेवर इमेजिन कि तुम्हारा कब उस लिस्ट में नाम आ जाएगा, ठीक है। लाइक इट्स नॉट लाइक कि किसी ने पढ़ लिया तो उसका 100% हो जाएगा, या किसी ने नहीं पढ़ा तो उसका कतई नहीं होगा। एंड इट्स नॉट लाइक कि मैंने पढ़ लिया तो मेरा फिर भी, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हारा हार्ड वर्क वेस्ट जाएगा, बट व्हाट आई कैन से इज दैट तुम्हें उन 1.5 आवर्स का अच्छे से यूज करना है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि तुमने कुछ नहीं पढ़ा तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। जस्ट बी वेरी स्मार्ट वाइल अटेम्प्टिंग द पेपर। पेपर इज टेस्टिंग योर स्मार्टनेस अभी, कि तुम कब क्या छोड़ सकते हो, स्पेशली इन एलिट पेपर। you need to understand कि it is more important to know when to leave a question than to know when to attempt a question, ठीक है। तो क्योंकि पेपर इज सो डिफिकल्ट, it happened to me when I give it in AILET 20, like when I gave my AILET 2020, उसमें there was one puzzle and I was just stuck in it, और फिर मेरा बहुत सारा टाइम चला गया and then I couldn't attempt easy वाली question, so I don't want you to experience the same fiasco। so इसलिए what I'd suggest is that सारे easy questions कर लेना और कहीं पे stuck मत होना, और फिर तुम्हारा हो सकता है। इट्स नॉट लाइक कि इट्स कम्प्लीटली आउट ऑफ द विंडो, यू नेवर नो, तुम्हारा हो सकता है। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, हो जाता है लोगों का। Correct. Like I cannot emphasize on whatever he said abhi enough. Stop, thinking कि हमारा नहीं होगा. And especially I got a lot of text कि CLAT was very like they funked it up or whatever. हो गया ना, अब नहीं कर सकते उसके बारे में कुछ. रोना गाना बाद में कर, तो हो गया तो हो गया. CLAT का रिलेशन नहीं है एलिट से कोई. जो हो गया, छोड़ दो पीछे. रो के कुछ भी नहीं होगा, ट्रस्ट में. मैं बहुत रोई थी, कुछ नहीं हुआ था. 5 दिन है, पढ़ लो, हो जाएगा एलिट. लाइक जस्ट एक बार जितना इतना सोचते हो ना कि एलिट नहीं होगा, एक बार जस्ट 5 मिनट बैठो आराम से और एक बार सोच के देखो हो गया तो क्या होगा. अगर उस मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आ गया तो क्या होगा. जस्ट थिंक दैट यू गॉट एडमिटेड इनटू एन. अगर गूज़बम्प्स नहीं आते तो फिर छोड़ दो प्रिपरेशन. उसके अलावा हाँ, एक सेकेंड बस. उसके अलावा गॉट क्वेश्चंस की अक्टूबर से करंट अफेयर्स करना इनफ होगा नहीं, बिकॉज़ यू टोल्ड टू रिवाइज इट फ्रॉम पास्ट 1 year. वी गेव AILET on 30th July, राइट? हाँ, तो एंड इट्स जून अभी, तो लाइक आई फील कि अक्टूबर से करना विल बी मोर देन इनफ, बिकॉज ऑब्वियसली मतलब कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हमेशा ट्रेंड में रहते ही हैं. तो आई थिंक कि अक्टूबर से करना इनफ होगा. देयर इज नॉट नथिंग कि वो लोग अगस्त 2022 में, लाइक 2021 में जाके स्पेसिफिकली पूछने वाले हैं. अगर टाइम है तो वो भी रिवाइज कर लो उससे पहले का, बट अक्टूबर से आई थिंक इट वुड सफाइस. एंड मॉक रिवाइजिंग नोट्स एंड जीके इज एनफ. आई बिलीव यस, मतलब योर नोट्स इज समथिंग, मतलब उसको बाइबल की तरह ट्रीट करो. दैट इज व्हाट आई डिड. अपने नोट्स ही सबसे ज्यादा एंड में काम में आते हैं, बिकॉज लाइक लुकिंग एट न्यू सोर्सेज ऑफ जीके ऑन योर लैपटॉप, आई थिंक वो लास्ट के डेज में बहुत पैनिक देता है. अपने नोट्स प्रोफेसर बहुत बार पढ़ चुके होते हैं, वेरी कंफर्टेबल विद देम, तो उनको तो प्लीज बहुत अच्छे से रिवाइज करना. एंड आई थिंक दैट विल सफाइस. Any other questions? I did not unmute myself, sorry. Did we speak about logical reasoning and the mock analysis? I was off for 2-3 minutes. No, we have not. I'll do that. So AR, हाँ, so AR, the thing is कि कभी आ जाता है, कभी नहीं आता है. So what I'd suggest is कि बिल्कुल ऐसा मत, don't be like कि ठीक है बिल्कुल छोड़ ही दिया या फिर सिर्फ उसमें ही लगना है. What I'm saying is logical reasoning में, because you have different sort of questions, ठीक है. तुम्हें AR में भी अलग मिलेंगे, लॉजिकल में भी अलग मिलेंगे, लीगल में भी अलग मिलेंगे, तो तुम हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो अभी, ठीक है. तो एज आई सेड, ट्राई टू फोकस अपॉन दी अप्रोच कि ठीक है अब अगर मेरे को इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो मैं
ये करना है, इन्फ्रेंस के क्वेश्चन आते हैं तो मेरे को ये करना है, ये वाले क्वेश्चन आते हैं तो ये करना है। अगर एक बार दिमाग में सेट हो गया कि ओके दिस इज हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो उस पर और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम बस ये देख लो कि अप्रोच क्या होनी चाहिए, दैट इज व्हाट आई मेनली फोकस अपॉन। पजल्स तुम बहुत ज्यादा मत करना, focus upon conditional puzzles because I saw this thing in PYPs कि conditional puzzles usually आती हैं, and just because you solve puzzle, just because you are good at puzzle doesn't mean you have to attempt the puzzle। ठीक है, तो तुम वो उस वाले जोन में भी मत चले जाना कि हाँ ठीक है अब तो करना ही है या तो मैं अच्छा ही हूँ, तो वो वाली मिस्टेक्स मत करना। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि you have to attempt all the easy questions पहले, and then you have to objectively think कि भाई अब डिफिकल्ट कौन सा, ये वाला करना है, अब ये क्या करना है, अब ये क्या करना है। ऐसा शुड बी योर अप्रोच रादर देन कि हाँ ठीक है अब एआर आ गया तो पूरा एआर खत्म करूंगा और पहले ये आया तो ये खत्म करूंगा। आई एम स्ट्रांगली अगेंस्ट दैट, तो वो मत करना। एंड इन ऑल दीज 3 sections which we have noted, AR, LR and legal, just try to think of the approach क्या होनी चाहिए। Tanvi, if you have anything to add. अगेन मतलब किसी like there might be questions जो नहीं हो रहे होंगे, do not stick to them. Remember, like you already know, I was reminding you कि every question is gonna fetch you 1 mark only. कोई ज्यादा नहीं दे रहा, कोई कम नहीं दे रहा। अपने आप को उस 90 मिनट्स में चैलेंज मत करना कि नहीं ये तो मैं करके ही रहूंगी, तो मुझसे ही होगा। ये एग्जाम पे बात करना, अगर नहीं हो रहा तो आगे बढ़ो, इजी क्वेश्चंस पहले सॉल्व करो बिकॉज वो भी उतना ही नंबर देने वाले हैं। ये पजल्स में काफी बार हो सकता है। एलेट जैसे 2021 वाज एन एक्सेप्शन, उससे पहले एलेट ऐसा होता था कि एक आध पजल बहुत गंदा देता था। तो अगर नहीं हो रहा है तो पजल को छोड़ो, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करो, डायरेक्शन कर लो, कोडिंग डिकोडिंग कर लो, जो आपको इजी लगे, जिससे आप कंफर्टेबल हो, जिन टॉपिक्स आप कंफर्टेबल हो उन पे जाओ, बिकॉज एवरी क्वेश्चन उतना ही नंबर देने वाला है। तो पजल्स में भी लाइक दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू कि मैं पजल्स को थोड़ा लेटर के लिए छोड़ती थी बिकॉज वो टाइम नहीं जाता, मतलब वो कई बार जल्दी एकदम से जाता है, कई बार टाइम लेता था। तो आई यूज्ड टू डू पजल्स थोड़ा एंड में, मैं जिन टॉपिक ज्यादा कंफर्टेबल डायरेक्शन से आई वाज कंफर्टेबल कि ये तो बनना ही है, और जो बाकी चीजें कोडिंग डिकोडिंग होती है दीज आई यूज्ड टू गिव हायर प्रायोरिटी सॉल्विंग के टाइम पे। एंड वही है कि डिफिकल्टी लेवल, अगर मैं सिंपल सा लॉजिक है, अगर इजी पेपर होगा तो वो ऑटोमेटिकली जल्दी खत्म हो जाएगा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आर गोना इंक्रीज। अगर पेपर डिफिकल्ट होगा तो वो सबके लिए डिफिकल्ट होगा, एंड एवरीवन इज गोना टेक मोर टाइम एंड एवरीवन इज गोना मेक लेस अटेम्प्ट्स। अगर वो ज्यादा करे तो वो तुक्के मार रहे हैं, सिंपल सी बात है, तुक्के नहीं मारने हैं। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग आइडियल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। Again, it depends on Depends on the difficulty paper. level. Yeah, it depends Yeah. on difficulty level of the paper. अगर पेपर आपसे बन रहा है, अगर आपको आ रहे हैं तो obviously you'll attend them. I won't say कि एक भी तुक्का मत मारना, intelligent guesses मारना, but वो भी एक लिमिट तक रखना। Accuracy important है because in competitive So exams, हाँ, yeah, so with relation to attempt वाली चीज, see different people have different strategies. I had my own strategy. I cannot say कि okay adopt the strategy और तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है, but my strategy was कि easy question सबसे पहले कर लिए, फिर इट्स नॉट लाइक कि है ना सिर्फ उससे ही मेरा काम हो जाएगा। मैं क्या करता था, फिर जो लीगल वाले होते थे, व्हेन आई वाज सॉल्विंग पीवाईपीस, आई सॉ कि लीगल क्वेश्चंस की डिफिकल्टी इतनी ज्यादा होती थी कि अगर मैं उसमें 2 मिनट लगाऊं, 3 मिनट लगाऊं, कितने भी मिनट लगा लूं, तब भी आई विल नॉट बी श्योर कि इसका आंसर यही होगा। ठीक है, तो इसलिए लीगल में माई स्ट्रैटेजी वॉज, मतलब थैंकफुली द पेपर वाज इजी, तो आई वाज वेरी श्योर कि है ना क्लैट एलेट 2021 में कि क्या आंसर होगा। बट माय स्ट्रैटेजी वाज कि अगर वो क्वेश्चन आ रहा है लीगल का, आई जस्ट एलिमिनेट 2 ऑप्शंस एंड मैं लगा दूंगा और मैं आगे जाऊंगा। ठीक है, आई स्किम थ्रू द, वो क्या कहते हैं, आई स्किम थ्रू द क्वेश्चन। मैं एक एक ऑप्शन तो हमेशा ऐसा होता है विच वी ऑलवेज नो कि ये तो हमेशा आंसर होने ही नहीं वाला है, एंड एक ऑप्शन और मैं एलिमिनेट कर लेता था इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट पॉसिबल, एंड 2 के बाद मैं फिर तुक्का लगाता था। मतलब लगाता तो क्या, दैट वाज माय स्ट्रैटेजी, बिकॉज आई सॉ इन एले 2020 कि जब मैं बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा था लीगल वाले क्वेश्चंस में, वो इतने क्वेश्चंस हुए नहीं और मेरा पूरा टाइम चला गया। तो और इट्स नॉट लाइक कि तुम पूरा लीगल छोड़ दोगे तो भी तुम्हारा एलेट हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें लगाने पड़ेंगे, सम लेवल पे तुक्के लगाने पड़ेंगे, एक्यूरेसी और मार्क्स फेच करना इजी वाले क्वेश्चन से, एंड फिर 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके तुक्के लगा देना। ठीक है, दैट इज व्हाट आई से।
ऑल्सो लीगल के लिए आई वुड रिकमेंड कि पास्ट के पेपर्स को रेफर करना, बिकॉज दिस इज व्हाट आई फेल्ट कि हमारे मॉक्स में जो लीगल आता था वो एक सर्टेन लेवल का आता था, बट देन एलेट 2015 से 2020 में 2021 वाज कंपैरेटिवली इजी, बट उसमें लीगल मुझे पर्सनली बहुत हार्ड लगा था। तो यू नेवर नो कौन सा वाला दे दे। तो मॉक्स अभी तक आप लगा ही चुके हैं प्रैक्टिस में। इफ यू प्रैक्टिसिंग लीगल अभी, तो आई वुड प्रेफर कि पास्ट ईयर पेपर्स को सॉल्व कर, इट गिव यू अ फेयर आइडिया। ऑल्सो व्हाइल यू सॉल्विंग, जैसे एलेट में काफी होता था ये कि क्वेश्चंस काफी बड़े बड़े होते थे, तो व्हाट आई डिड वाज कि आई यूज्ड टू लुक फॉर लाइक शॉर्टर क्वेश्चंस, मतलब वो एक एक पेज डेढ़ पेज तक भी जा रहे हैं, ऑब्वियसली फिर अगेन उतना ही नंबर मिलना है। शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस जो दिखते जा रहे हैं, स्किम थ्रू इट, वो पहले सॉल्व कर लो। उसके अलावा रिगार्डिंग पजल्स एंड गॉट अ क्वेश्चन कि तब क्या करें व्हेन यू हैव गिवन अ लॉट ऑफ टाइम टू अ पजल एंड देन एंड में आपको चलता है कि नहीं हो रहा एंड टाइम वेस्ट हो गया। अगेन अपने दिमाग में डालना बंद करो कि ओ मैंने 5 मिनट वेस्ट कर दिए, अगले क्वेश्चन पे जाओ। अगर टाइम वेस्ट हो गया है तो बाद में अगर टाइम बचे तो वापस उस पे आ जाना, इतना स्टिक मत करो। और पहली बात है कि इतना टाइम वेस्ट मत करो कि इतना लगे। डू नॉट स्टिक टू अ क्वेश्चन, पजल देख लिया नहीं हो रहा छोड़ दो, आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, बाद में टाइम बचा वापस आ जाना, देखा जाएगा। इतना पैनिक मत Ashmi, करो। Asmi, you had a question? she's asking what was the cutoff last year. What was the cutoff? Yeah, I remember I scored 104. My rank was 26. Cutoff was So it around, should be around 100 it was only. around है ना? 100. Yeah, it was around Yeah, 90 around 100. yeah. So you need to But understand then कि again when the paper easy था paper पिछले साल। was very easy, हाँ, still cutoff was 100 only. तो अगर it's not मतलब it's not like you need to score 120 या 130 in order to get into NLU Delhi. ठीक है, तुम अच्छे से बिल्कुल it is very much possible to get into the college, and I don't want you to lose hope because you never know. I'm telling you that. exactly. Again, I'm getting a lot of questions regarding ideal number of attempts. नहीं है कोई ideal number of attempts. It is gonna vary or like difficulty level पे paper के. But then I already mentioned कि 110, 150 is something जो मुझे लगता है कि इतना तो होना चाहिए. It would vary from person to person. Ideal number नहीं है. Apart from that, people are referring to so like specific books कि इतना पढ़ा है. Is it enough? मैंने सारी books नहीं पढ़ी है. If you feel the book is covering all the major topics and all the types of questions which you have encountered till now in mocks and previous year papers, then I guess that book is enough. All right. I think we would have solved most of the queries of the students, right? Tanvi and Aryan, है ना? Yes, sir. And I'm sure I think ये last minute ज्ञान इन लोगों के लिए, the way you objectifiedly put it, man, that's really amazing. Yeah, I could see the kind of efforts you've done in this sheet. Seriously, it's so nice to see that. I'll try passing on the sheet to the kids out, right? I'm sure they'll be really helped out with this. Uh, तन्वी एंड आर्यन, बियॉन्ड दी ऑब्जेक्टिविटी आई थिंक बहुत आवश्यक होता है कि अपन ऑब्जेक्टिविटी से ऊपर आए। तुम्हारी फीलिंग क्या कहती है आखिरी के 6 दिन में किस तरह का अप्रोच होना चाहिए अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के अंदर? व्हाट शुड बी द मेंटल अप्रोच यार? तुम दोनों ने इस चीज देखा है एंड द टाइमलाइन इज अमेजिंगली सेम व्हाट आई कुड इमेजिन, राइट? तो किस तरह का अप्रोच Yeah. होना चाहिए ऐसे दिन में कि अपन वो शाहरुख खान वाला की बॉस आग लगा देंगे कि बस कोई दिक्कत नहीं चलने तो जीवन बढ़िया है, कैसा होना चाहिए? So आज तो अभी we'll tell them कि how's the college in NL, how's our college, we'll tell them, तो उसमें उनकी आग लग जाएगी. But to be honest, मतलब while I was attempting AILET 2021, I knew मतलब CLAT results were already out, तो मेरा कोलकाता हो गया था and I was very happy with what I got. तो बहुत चिल था सर में, मतलब मेरे को घंटा भर पढ़ रहा था क्या कैसा पेपर है, मैं तो जाना है, मैं फॉर्मेलिटी में मम्मी से बोल भी रहा था जाना है कि नहीं जाना है, बोली चले जा ठीक है. मैं गया फॉर्मेलिटी के लिए, मैंने पेपर दे दिया. मैंने ठीक है जो भी था मजे मजे में पेपर दिया, हवा भी बढ़िया चल रही थी भोपाल में, बढ़िया मजे आ गए. और फिर हाँ, पेपर दिया और मेरा हो भी गया. एंड सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब तुम बहुत चिल हो गए, द थिंग इज यार, यू नो कि ज्यादा
मतलब ऑलमोस्ट एवरीवन आउट देयर जो पेपर अटेम्प्ट करेगा वो टेंस्ड होगा, वो अपने शुरू के 10 मिनट खराब करेगा, वो क्वेश्चंस में अटकेगा, वो ये सारी गलतियां करेगा, तुम्हें पता है। तो तुम उसको एक एडवांटेज लो, ठीक है। अगर पेपर बहुत डिफरेंट भी आ रहा है ना, तो दैट इज योर एडवांटेज। व्हाई? बिकॉज यू नीड टू एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। कि भाई तुमने वो कर लिया ना कि हाँ भाई, अब यू शुड बी सरप्राइज अगर कुछ सरप्राइज नहीं आया, समझ रहे हो कि कुछ ना कुछ तो आएगा ही। तो डोंट लूज अ नर्व्स तब कि है ना, यार ये क्या आ गया, ये मैंने नहीं करा, यार ये क्या आ गया, ओ सबकी लगेगी वाट, चलो ठीक है अब मैं क्या करना है, हैंडल करना है, बस ऐसे देखो। तुम खुश हो जब कुछ भी डिफरेंट चीजें आती हैं जो तुमने एक्सपेक्ट नहीं करा है, तुम खुश हो, बिकॉज ज्यादातर लोगों ने भी वो एक्सपेक्ट नहीं करा है, और फिर उनके 2-3 मिनट जाएंगे, 5 मिनट जाएंगे, 10 मिनट जाएंगे। सो जस्ट बी रिलैक्स, ठीक है। और like to be honest, it's not like नहीं मतलब कॉलेज मैटर्स डेफिनेटली, बट इट्स नॉट लाइक कि तुम्हारा नहीं हो रहा है क्लियर फिर भी तुम नहीं कर पाओगे। मतलब आई हैव सीन पीपल, मतलब लिंक्डइन पे मैं लोगों की सीवी तो ऑब्वियसली तुम्हें फर्स्ट सेकंड ईयर में देखनी होती है ना। तो उसमें तुम देखोगे कि है ना, जो लोअर एनएलयूज या फिर जो एनएलयू में है भी नहीं, दे हैव डन सो मेनी थिंग्स। तो तुम्हारा इट्स नॉट लाइक कि करियर बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। तो तुम्हारा बिल्कुल शॉर्ट रहेगा। I'll tell you, Aryan, Tanvi, there was a child who used to come down to me in class 11. समीक्षा सिंह करके बच्ची थी वो, a couple of years back. तुम लोग 6th 7th में हो उस टाइम पे उस हिसाब से। So she took CLAT, she didn't get through. She took admission in Jivaji. अभी ग्वालियर में she's I think one of the youngest to become a civil judge. यस यस मतलब वो दिखती भी वैसी है जैसे 11th में पढ़ाया था मैंने आरपीसी। When she became a civil judge, she came and met me. So I think, in fact, there's one more example. There's one CAT student who used to come down to us in CAT 2016. मिनी अग्रवाल नाम था, इज अमेजिंग राइटर, यू नो, उसने टाइम्स ऑफ इंडिया में इंटर्नशिप की थी हमारे टाइम पे। अभी थोड़े दिन पहले आई गॉट टू सी हर न्यूज़पेपर, यूपीएससी रैंक 96 मैन। I mean, the story keeps on changing. AILET का लास्ट डेज का तन्वी had a very different story, क्योंकि मेरी बहन भी है तो इसको मैं जानता भी हूँ। तन्वी, share your story. How did things work? My story was very different. I fucked up class like anything. I would say मैंने पढ़ाई नहीं करी, मैंने बहुत पढ़ाई की थी. But then you need to accept the fact कि हर दिन आपके लिए अच्छे नहीं होते. And it's okay if things go wrong. उनको accept करो. मैं बहुत रोई गई, बहुत ज्यादा रोई गई. दिमाग खराब हो गया था मेरा. मैंने भैया से डांट खाई, मैंने अपने घर वालों से डांट खाई, मैंने सबसे डांट खाई. मेरी मम्मा ने मुझे डांट के बंद कर दिया था रूम में, तो 5 दिन पढ़, बाद में देखा जाएगा. So when I went for giving AILET, I went with zero hopes. And जैसे आर्यन mentioned कि खुश होके दोगे ना तो ज्यादा दिमाग में अच्छे से प्रोसेस करेगा. तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि आई हैव नथिंग टू लूज. जाती हूँ, पेपर देती हूँ, फ्रेश माइंड से जो होगा देखा जाएगा. मेरे को अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं कर लूंगी कुछ ना कुछ लाइफ में. अगर ये मेरी जस्ट आई वुड लाइक टू रिमाइंड, ये लाइफ का एंड नहीं है. ट्रस्ट मी, नहीं है. कॉलेज मैटर करता है बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट. लाइक इतना प्रेशर मत लो कि पढ़ाई नहीं कर रहे, अरे अरे मेरा क्लैट बिगड़ा, स्पेसिफिकली जिनका क्लैट बिगड़ा है, इट्स ओके, ठीक है, लाइफ का एंड नहीं है. अभी आई वुड से कि सोचो ही मत कि मैं कौन से कॉलेज जाऊंगा या जाऊंगी, और कोई भरोसा नहीं, कंसोर्शियम कुछ दिन में रिजल्ट निकाल दे. उस पर भी आई वुड से कि टाइम वेस्ट मत करना. जो हो गया हमने करा था, बहुत करा था। हाँ, जो हो गया तो वो एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, सिंपल. हाँ तो अगर हो जाता है किसी अच्छे एलएमयू में, इट्स गुड, बहुत अच्छी बात है, कांग्रेट्स टू यू. इट्स ऑलवेज गुड टू हैव ऑप्शन ऑन योर प्लेट एट द एंड. अगर नहीं होता है तो भी जस्ट गो विद द माइंडसेट दैट यू हैव नथिंग टू लूज. क्योंकि आप देखो, एलिट के लिए वैसे भी मानती है ना कि नहीं होना है, तो जब नहीं होना है तो जाके बेस्ट देख के आओ, क्या पता हो जाए. दैट इज हाँ हाँ, तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि इतने गए बीते नहीं हो, लाइफ में कुछ ना कुछ कर लोगे. ये मत बोलो कि मेरा ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, मैं कहीं नहीं बचा, बर्बाद हो गया. ये बुलशिट है. हाँ 5 दिन है, जो जो बताया है उसको पढ़ाई कर लो. हो गया, बहुत अच्छी बात है. नहीं हो तो भी जिंदगी का एंड नहीं है. सिंपल. यस. Great, man. Great piece of advice from all of you. Thank you so much, guys. And I'm sure every student out here would have understood. ये real life examples हैं, guys. सुन लो दोनों से. इन लोगों ने exactly वही face किया है जो तुम अब face कर रहे हो, and they are right in front of you, guiding you. Honestly, I feel really proud that you when we teach kids and they come and mentor. And I'm sure this you will have certain juniors in your college for sure by this mentoring, right?
And guys, they're always open for you. I'll share their contacts. Message them. They'll mentor you for sure. They would love to have you as the juniors. अभी तो भी मैं तो मैसेज आ रहा है बहुत मुझे भी। पॉजिटिव मैं बहुत अभी भी पॉजिटिव मैसेज आ रहा है, पता है इंटरेक्शन करूंगा। मेरे को बहुत डर लग रहा है। देखो, जिसको डर लग रहा है इन दोनों से बात करो। ये आई थिंक दे कैन मोटिवेट यू बेटर, बिकॉज बेटा लास्ट ईयर इन्होंने सब कुछ वो देखा हुआ है। तो दोनों थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टिंग लेवल ऑफ प्रेपरेशंस हैं, लेकिन चिल रहो। आई थिंक दिस इज द बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस बोथ ऑफ देम आर गिविंग। या चलो, थैंक यू Someone's सो मच asking, आर्यन। हाँ प्लीज प्लीज तुम yeah, सब करो आराम से। someone's asking कि what's your experience in NLU Delhi? तो मैं वो भी कुछ बता ही देता हूँ। So the thing is कि कॉलेज लाइफ बहुत मस्त है, ये बहुत ऑन चिल है। ऑन रिकॉर्ड है बेटा, ध्यान रखना है। मेरा Okay, the okay, chilliest colleges, trust me. सारे NLUs yeah, में, सारे law colleges में इतना chill नहीं मिलता कहीं. हाँ, मतलब we will get literally मतलब when it comes to students, faculties, opportunities, everything is at the best यहाँ पे, ठीक है? Like so like I'd want to tell you this कि हमारे there's one IPC professor and he asked us, one of the students, कि go and he was asking a volunteer कि वो बंदा accompany करे एक इंसान को जो जाएगा एक डेथ पेनल्टी कन्विक्ट का इंटरव्यू लेने एक जेल में। It was Anup sir, Project 39. अनूप सर, या सो मतलब हम जाए Wonderful. जेल में, या सो द एक्सपीरियंसेस दैट यू विल गेट, द अपॉर्चुनिटीज दैट यू विल गेट इन NLU दिल्ली बहुत अच्छी हैं। द कॉलेज इज वेरी चिल, द एडमिन इज वेरी प्रो स्टूडेंट, ठीक है, बहुत अच्छा है, एवरीथिंग इज वेरी गुड। यू विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू बी इन दिल्ली, ठीक है, इफ नॉट द बेस्ट देन वन ऑफ द बेस्ट सिटीज इन द कंट्री। तो सब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तुम्हें सारे। when it comes to Supreme Court is there, हर चीज is there, law firms आते ही उधर है, उसके बाद जाते कहीं और है, so you'll find everything there. If you are not sure about your ये फील्ड की किस में जाना है, लिटिगेशन ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जुडिशरी और कॉर्पोरेट, NLU Delhi is the best place because यहाँ पे you will find people doing all sort of things. So it's just amazing place and we definitely love you if you will come to I do NLU want Delhi and कि be कोई a आए, yeah. ग्वालियर के लोग नहीं है वहाँ पे. Exactly, exactly. हाँ, अब तो ग्वालियर के लोग हर जगह हैं, दो तो तुमने दिख रहे हो। एंड और नहीं है. तो आप एक्चुअली अनुज भावे के बाद आई रिमेम्बर अनुज भावे, दीपाली, तो टू किड्स आई Yeah, थिंक, दोनों फिफ्थ ईयर में आ class गए हैं। में. हाँ दोनों, उसके बाद अब तुम दोनों आए हो। तो उस साल भी दो गए थे, दिस ईयर आल्सो टू। तो लेट्स हैव मोर पीपल नाउ रिप्रेजेंटिंग, बिकॉज इधर वाले तो NLU सब में कहीं ना कहीं अपने सारे प्लेयर वाले अब इधर भी आएंगे जल्दी से, जल्दी से आएंगे। I again like I also got something LDD के बारे में बताओ तो again I would say जितना बाद में देखो एक टाइम आया था मेरी लाइफ में जब मैं क्लैट AILET पे प्रिपेयर कर रही थी कि मेरे पास आराम नहीं है, लाइफ मोनोटोनस हो गई है, मैं चिल नहीं कर पा रही, आराम से सो नहीं पा रही। फिर एक टाइम आया था जब मैं चिल कर करके थक गई। आई जेन्युइनली मेरा पूरा जो फर्स्ट सेम है ना, मैं चिल कर करके थक गई थी घर पे। तो आई वुड से कि अगले 5 दिन एफर्ट्स डाल दो, ज्यादा सोचे बिना कि होगा नहीं होगा, अनसर्टेनिटी दिमाग से निकाल दो। जस्ट थिंक कि नहीं है कुछ भी लूज करने के लिए, मैं जाऊंगा जाऊंगी, अपना बेस्ट देके आऊंगी, जो होगा देखा जाएगा, सिंपल। तो अगेन जितना बाद में चिल करने को मिलेगा उतना नहीं होगा। लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट NLU gives you, मतलब बहुत चिल एटमॉस्फेयर है, द प्रोफेसर्स आर वेरी चिल, द बैचमेट्स आर वेरी चिल, यू विल हैव लाइक द सीनियर्स आर आल्सो वेरी चिल, बिकॉज़ बाकी मैंने NLUs में कल्चर सुना है कि बहुत स्ट्रिक्ट होता है, नहीं होता, अपॉर्चुनिटीज की प्रॉब्लम होती है, यू हैव एक्सेसिबिलिटी अपने कॉलेज में। सारे इंटरनेशनल, मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल मूड्स का वेन्यू NLU दिल्ली होता है, इंडिया कॉम्स का NLU दिल्ली होता है, और फिर तुम्हारे सीनियर्स का तुम्हारे बहुत अच्छे, तुम्हारा बड़ी ऑफ बैच बॉब कहते हैं, तो यू विल गेट plenty of seniors जिससे तुम अप्रोच कर सकते हो। Your life is gonna be very very good if you get into NLU Delhi। अगर नहीं आते हो तो भी it's very nice, but आते हो तो बहुत ही अच्छा। हाँ, like I would definitely want कोई आए। नहीं पक्का आएगा 100%। ठीक है, It's very good. yeah. Thank you so much guys, God bless you. Warm thanks from everyone from my side. God bless you, and let's see, I mean keep mentoring these guys. I'll share your contacts with them, तुम्हारे डॉक्यूमेंट मैं इनको भेज दूंगा, right? They'll be available on WhatsApp for sure, क्योंकि अभी busy बच्चे हो गए हैं थोड़े से, so just message them and we'll take it forward around. Thank you so much once again. God bless No you. problem. Bye बच्चे लोग, bye. Thank you so much. Tanvi, thank you, bye.
Bye everyone. All the best. All the best.